Hi to all. Our next topic is the challenges of casteism. You uh, you have already read about the casteism in the first unit of our study. Let us study something extra about the casteism. Now, something extra about the challenges of casteism. Caste continued to be a major determinant of the political and social life of India. It has been acting as the great limitation of the nation building in India. Presence of caste and casteism has been adversely affecting it. Unfortunately, caste continued to be a major determination of the political participation, voting behavior, uh, electoral politics, and other aspects of the political life of India. Almost all the political parties and their leader use caste for securing their political interest. Caste has determining the organization, nature, and working of the political party and interest group, legislature and bureaucracy, and in fact all political institutions and their functions. Caste voting, caste based candidature, caste riots, caste war, caste conflict, and the issue of reservation versus non-reservation are all actors of Indian politics. तो आम यूनिट 1 सेकेंड चैप्टर कास्टिजिम पढ़ी तो तुम समझ जानिच जे कास्टिजिम केते गोटे बड़ माने इम्पोर्टेंस कास्टिजिम इंडियन पॉलिटिक्स केते इम्पोर्टेंस तुम जानिच तो इंडियन पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को कास्ट डिटरमाइन करूची जोटा कि गोटे बड़ माने लिमिटिंग फैक्टर जोटा कि कौन पाई द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो तैयारी माने हमर देश को तैयारी करिया पई जाय दरकार बा नेशन माने गोटे भलो नेशन होबा पई गोटे ठीक ठाक नेशन होबा पई जहा माने बड़ हिंड्रेंस होउची हमर कास्ट सिस्टम टा तो कास्टिजिम एंड कास्टिजिम माने एडवर्सली इफेक्ट करूची द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को दुर्भाग्यवशतः कास्टा पूरा पूरी इन्फ्लुएंस करुच्ची क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वोटिंग बिहेवियर को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एंड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ आमे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आमे कास्ट माने जे पॉलिटिक्स पशु से कास्ट देखि पशुची जो निज कास्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी बा निज कास्ट को सपोर्ट करला भले किसी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी माने सेथे जोग दउचंती सेमिति जेतले इलेक्शन समय आसुची जेतले माने भोटिंग लोक माने भोट दउचंती सेते निज कास्ट लोक को भोट दउचंती तो पॉलिटिकल लाइफ रो ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट को सब दिग को कास्ट ही इन्फ्लुएंस पकाउची आ सब पॉलिटिकल पार्टी आ लीडर माने पछ घुंचा जाऊना कौन से गोटे माने पर्टिकुलर कास्ट को फॉलो करने सपोर्ट करने आइदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि से माने जेकोसी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट माने जेकोसी गोटे कास्ट को सपोर्ट कर निजर सेक्टोरियल इंटरेस्ट को फुलफिल कर बिफोर एग्जामिनिंग द रोल ऑफ कास्ट लेट अस understand the meaning and nature of the casteism. First, what is caste? The word caste is derived from the Spanish word which means breeds or a complex of hereditary quality. It is applied by the Portuguese to the particular Indian institutions known by the name of jati. M.N. Srinivas defined caste as a hereditary, usually localized group having a traditional association with an occupational and the particular position in the local hierarchy of the caste.
तो वर्ड कास्टा स्पेनिश वर्ड कास्ट अच्छी जार मीनिंग हूँ ब्रीड बा स्ट्रेन बा ए कम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटी क्वालिटी गोटे गोटे हेरिडिटी माने कौन वंशानुक्रमिक गोटे जो क्वालिटी सेटा को कास्ट बोली कहा जाए। तो यही कास्ट वर्डटा फास्ट पर्तुगीज माने अप्लाई करथिले टू द इंडियन पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूशन जहाँकि जाति कह जाउथिला इंडिया रे। एम.एन. श्रीनिवास डेफिनेशन देछिन कास्टिज्म कास्ट उपरे से कहि कोन कहउछन्ति ना कास्ट होउची कोन कास्ट होउची गोटे हेरिडिटरी यूजुअल लोकलाइज ग्रुप माने गोटे वंशानुक्रमिक गोटे स्थानीय लोक माने लोक मानकर गोटे गोष्ठी जार कि पर्टिकुलर ऑक्युपेशन अछि आ तांकर गोटे पर्टिकुलर पोजीशन अछि गोटे ट्रेडिशनल एसोसिएशन अच्छी आउ कास्ट भितर गोटे हायरार्की अच्छी माने छोट उच्च नीच जमी ब्राह्मीण वैश्य क्षत्रिय एमती गोटे हायरार्किकली सेटा ऑर्गेनाइज होइछि। नेक्स्ट कास्ट एंड कास्टिज्म इन इंडिया द अरेंजमेंट ऑफ सेवरल कास्ट ग्रुप इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप इन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द कास्ट सिस्टम। When caste acts the basis of social behavior, it is called casteism. Caste system and casteism all constitute the input of the politics in India. Caste and casteism has been the challenges before the national integration of in India. तो सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार कास्ट को गोटे पर्टिकुलर गोटे निर्दिष्ट भाव अरेंजमेंट करबा प्रणाली को आमे कास्ट सिस्टम बोली कहूचे। जेते बेले कास्टा बा जातिटा सोशल बिहेवियर रो गोटे बेसिक हो जाए बा समाज रे जो बंचिया पई बा समाज रे चलिया पई गोटे बेसिस हो जाए कास्टा ताको आमे कास्टिज्म बोली कहू। से भली कास्ट सिस्टम आ कास्टिज्म सब गुडाक हम पॉलिटिक्स रे गोटे इनपुट भलिया काम करे। तो कास्ट आ कास्टिज्म आम जो जातीय संहति पे गोटे बड़ चैलेंजेस सृष्टि करुच्ची। नेक्स्ट नेगेटिव एंड हार्मफुल रोल ऑफ कास्टिज्म रो कौन नेगेटिव आ हार्मफुल रोल अच्छे से विषय डिस्कशन करिवे। फर्स्ट कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन different castes have paved loyalty to the different political party and their ideology. Right from his birth, an Indian citizens inherent in a particular caste and grows up as a member of a particular caste group. He belongs to either in a high caste or the scheduled caste family. In the process of picking up its political orientation, attitude and beliefs, he naturally comes under the influence of caste group and casteism. Caste value and caste interest influence its socialization and consequently his political thinking, awareness and participation. He banks upon the caste solidarity for occupying and performing a leadership recruitment role. This factor has been a source of trouble for India. तो डिफरेंट कास्ट ग्रुप माने अलग अलग जाति लोक माने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ऊपर को लॉयल्टी देखती आइडियोलॉजी को भी मानती। तो इंडिया रे जन्म हवा ठू ही जन इंडियन सिटीजन जेकोसी गोटे कास्ट रही ही जन्म हुए आदर से कौन गोटे बड़ माने हायर क्लास फैमिली होता है कास्ट फैमिली हो पाए कि गोटे कौन आमर पछुआ वर्ग फैमिली भी फैमिली को बिलंग करुए। तो से जिते बड़ हुए से कास्ट मेंबर हिसाब रे ही से बड़ हुए बा से कास्ट ग्रुप रे मेंबर हिसाब से गणा जाए। और जिते बड़े से पॉलिटिक्स साइड को आसे बा पॉलिटिक्स को बुझे से माने नेचुरली कौन करे ना से कास्ट ग्रुप
को ही विश्वास करे बा भरोसा करे आ से माने कास्टिज्म बा कास्ट आ कास्टिज्म ऊपर ही माने द्वारा ही इन्फ्लुएंस हुए प्रभावित हुए तार सामाजिक प्रक्रिया को कास्ट वैल्यू ही इन्फ्लुएंस करे सपोज जड़े मंत्री जड़े ब्राह्मण घर लोक तो जिते से जन्म हो तो ब्राह्मण ही जन्म है बड़ है ब्राह्मण हो बड़ है तो जिते से पॉलिटिक्स बुझिला पॉलिटिकल पार्टी को बुझिला पॉलिटिक्स महत्व कौन जानला तो सी फॉलो कला क्या फैमिली जो पार्टी को फॉलो कले से ही से फॉलो कले सी ही फॉलो कला आउ से पार्टी द्वारा बा से पॉलिटिक्स द्वारा ही से इन्फ्लुएंस है तो सी फैमिली जो कास्ट को फॉलो करते से कास्ट को ही फॉलो कला कहीं फॉलो कले से माने लीडर हो पार से पॉलिटिकल पार्टी कौन गोटे पोजिशन पाइपर से जोटा कि इंडिया पाई बा आम देश गोटे बड़ प्रोब्लेम क्रिएट करुच्ची टू कास्ट बेस्ड लीडरशिप रिक्रुटमेंट Caste influence is the process of leadership recruitment. This is particularly true of the caste conscious people like the states like Haryana, Bihar, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. In Tamil Nadu, normally the leadership comes from the Vaishnavas or Brahmin. In Haryana, the leadership generally come from the Vaishnavas or Brahmin. In Andhra Pradesh, the Reddish or Kamach or the Bholamas usually provide the leaders. तो कौन है पॉलिटिकल माने लीडर्स भी माने किए माने को मैंने लीडर हे सेटा को भी माने कास्ट सिस्टम ही इन्फ्लुएंस करे पर्टिकुलर से जो लोक मैंने बहुत कास्ट को विश्वास करते जमी तमिलनाडु आमर हरियाणा आंध्र प्रदेश ए सब कास्ट सिस्टमटा बहुत स्ट्रंग तो सेगुड़ाक से सब एरिया रे लीडर माने पर्टिकुलर कास्ट ही आसी था जमी हरियाणा रे वैष्णव कि ब्राह्मण फैमिली लीडर आसती सेमती आंध्र प्रदेश रे रेड्डी बा कामस बा आमर बलबांग फैमिली माने से माने पर्टिकुलर लीडर दे था थर्ड कास्ट बेस्ड पार्टी पॉलिटिक्स Caste factor is the constituent of the Indian political system. Some of the political parties have directly caste-based basis, and some other party indirectly the bank of casteism. In particularly, the regional political parties stand predominant influenced by the caste factors. The DMK and AIDMK are non-Brahmin rather than Brahmin political party in Tamil Nadu. In Punjab, Akali Dal has a jati-based identity stance influenced by the issue of jati vs versus non-jat. All political parties in India use caste as the means for the securing the vote in election. तो कास्ट फैक्टर बा जाति होची पॉलिटिकल पार्टी गोटे उत्पत्ति स्थली किछि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली कास्ट बेस्ड थांती आ किछि पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली कास्टिज्म को बा कास्ट को सपोर्ट करके आगु को जाबा चेष्टा करंती पर्टिकुलारली जो आम रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बा आंचलिक पॉलिटिकल माने राजनीतिक दल अछंती से माने कौन से ना कौन से गोटे कास्ट को ही इन्फ्लुएंस कास्ट द्वारा इन्फ्लुएंस होगी गढ़ाई था जमी तमिलनाडु रे डीएमके एआईडीएमके सेमती पंजाब रे अकाली दल तो सब पॉलिटिकल पार्टी इंडिया रे कास्ट फैक्टर को यूज करती भोट माने इलेक्शन ने भोट सिक्योर करने पाई। 4 कास्ट एंड कास्टिज्म इन इंडियन इलेक्शन। The caste factor play a key role in the election process of India. All the political party give a higher importance to the
caste when they choose their leader and allocated constituency to their candidate. The constituency where the number of people are Muslim are normally filled by the Muslim candidate, and an area predominated by Jat, the Jat candidate have fielded. Even the self-justified secular parties take into the consideration caste factor selecting their candidate. In the election campaign, votes are demanded in the name of caste. तो इंडियन इलेक्शन में भारत निर्वाचन में कास्ट सिस्टमटा बा कास्ट फैक्टरटा गोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले करे. तो माने प्रति पॉलिटिकल पार्टी तांकर माने कास्ट फैक्टर को इम्पोर्टाट देकी तांकर प्रार्थी चयन करती आ कन्स्टिट्यूएंट आलोकेट करती. जमीती जोठी जो कन्स्टिट्यूएंट रे मुस्लिम माने बहुत अच्छे से मुस्लिम कैंडिडेट रहिबे, जोठी जात बहुत अच्छे जात कैंडिडेट रहिबे, जोठी हिंदू अच्छे से हिंदू कैंडिडेट रहिबे. जेतले कैंपेनिंग भी हुए से माने ए कास्ट को नहीं कि रिलीजन को नहीं ही कैंपेनिंग करती और वोट रिलीजन को बा कास्ट अनुसार डिमांड करती. जमीती सपोज जने मुस्लिम तो से मुस्लिम लोक ही भोट माने डिमांड कर मु मुस्लिम मते भोट दबु. जने हिंदू से मु हिंदू पुओ मु तो माने कम्युनिटी लोक मते भोट दबा तो बाध्य. ए भोली से माने इनडायरेक्टली लोक फोर्स करती ऑन द नेम बाय द नेम ऑफ कास्ट. 6. Caste as the source of division. Caste act as both unifying and dividing the Indian politics. It provides the basis of emergence of several interest groups in the political system, each of which compete with each other. Unfortunately, the caste and casteism leading the unhealthy struggle for power and acting as a divisive force. Existence of 2 or 3 big caste groups has been always a source of factionalism in Indian society and politics. तो इंडियन पॉलिटिक्स रे यूनिफाई करबा बा डिवाइड करबा माने कास्ट सिस्टमटा होची इंडियन पॉलिटिक्स को यूनिफाई भी करि परिबो और डिवाइड भी करबा एकत्र करि परिबो और भाग करि परिबो. तो कास्ट सिस्टम पई हमर नंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट होचन जो माने कि परस्पर सहित बेकार स्ट्रगल करूचंती. तो कास्ट और कास्टिज्म सब बड़े अनहेल्दी स्ट्रगल ही लीड करती. जोठी मोर देन 2 बड़ बड़ कास्ट ग्रुप अच्छा से भर सब फैक्शन सब डिवीजन ही हुए. तो कास्ट सिस्टमटा जो अच्छी कास्ट चाहिए बेले बेले यूनिफाई भी कर बेले बेले डिवाइड भी कर इंडियन पॉलिटिक्स रे. 6. रोल ऑफ कास्ट इन गवर्नमेंट मेकिंग. सिंस caste as a major features of society and act as a important factors in various process of politics, it also plays role in the decision making process. Even the issue of reorganization of state and its territory, caste factor influence the government making of the state. Party and power try to use it. तो जेहेतु इंडियन पॉलिटिक्स रे कास्ट गोटे मेजर रोल प्ले करुच्ची. तो गवर्नमेंट मेकिंग रे प्रोसेस भी कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी. तो नेक्स्ट स्टेप फॉर चेकिंग कास्टिज्म. there is every need to check the role of casteism in Indian politics. 1. Adoption and popularization of secularism as the best way of life. सेकुलरिज्म को आडप्ट करा दरकार आ पॉपुलराइज करा लोकप्रिय दरकार जे एटा हो बेस्ट वे ऑफ लाइफ जे बंचिया पई एटा सबटू बेस्ट वे. सेकेंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन रो माने ठीक एजुकेशन को स्प्रेड करा दरकार.
Third, making education value based. Then use of mass media, particularly TV and film, to making casteism baseless and unnecessary. 5. To encourage intercaste marriages. 6. To promote and develop a free flow of trade, commerce and business. 7. To prevent the political party to using casteism as the basis for getting vote. 7. Casteism should be treated as the social evil, and strong social movement against casteism should be encouraged. 9. Determined action should be taken against a person indulging in caste violence and caste communalism. With this step listed above, we can eliminate the casteism from our society. In next class, we will discuss the challenges of regionalism.